Good evening, everyone. Good evening. Welcome to BYJU'S exam prep. My name is 𝗟𝗲𝗴𝗋 and I hope all of you can hear and see me clearly. Something went into my eyes suddenly the moment I had to start the session. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. All right. So we've been waiting for this session for quite a while. We've been wanting to do figures of speech for many days. And क्योंकि questions बहुत सारे आते हैं figures of speech में, if you look at the past year papers, every year कुछ एक से दो questions certainly आ रहे हैं और ये बहुत ही easy topic है. It doesn't require a lot of effort from your side, from my side as well. So why don't we just pick it up and do it? Guys, I'll have to put my camera on off for a second. पता नहीं क्या हो गया यार, for some reason something just went into my eye. Okay. So क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है that doesn't it's okay अनीशा, आप वो अटेंड कर लीजिए, ये रिकॉर्डेड बाद में देख लीजिएगा. ऑल राइट, ठीक है. सो क्योंकि देखो फिगर्स ऑफ स्पीच आता है एग्जामिनेशन में एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. आप स्कूल में इसको मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं. You've been touching upon it for so many years. And if you just sit down and work on this from the perspective of CLAT, you would barely take a couple of days. और 2 दिन की मेहनत से ना आप इजीली मास्टर कर सकते हो ये वाला टॉपिक. तो इसीलिए मैंने इस क्लास को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज पार्ट 1 ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. पार्ट 2 में मैं आपको और थोड़े ट्रिकी लेके आऊंगी. आज मैं सिंपल वाले लेके आई हूँ जो कि बहुत कॉमनली आप देखते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, आयरनी. कुछ थोड़े से ट्रिकी वाले भी हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे थोड़ा सा. बट रिमेंबर, अगर आप कोई भी ग्रामर बुक उठा के देखते हैं, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच टू बी एंडलेस. कितना डेप्थ में करना है, कहां तक करना है, आई विल बी टेलिंग यू दैट अक्रॉस द लेंथ ऑफ द क्लास. स्टिक विथ मी टू द एंड. So let's first have a look at the agenda of the session. We'll discuss the common figures of speech that can come in CLAT or ALET or any other law entrance examination. We'll also see a few examples और examples को process करके हम देखेंगे figures of speech क्या है. By the way, this class will be divided into 2 parts, part 1 and part 2. हम दोनों पार्ट्स करेंगे. हम कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक मैराथन लूंगी फिगर्स ऑफ स्पीच पे. सो आई एक्सपेक्ट कि आप ऑलरेडी होमवर्क कर चुके होंगे दोनों पार्ट्स के और अपने पार्ट पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का. और उसके बाद हम अच्छा 1 मिनट फिगर्स ऑफ स्पीच का. और उसके बाद हम जो मैराथन लेंगे, मैं आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस दूंगी जहां हम डिस्कस करेंगे इन फिगर्स ऑफ स्पीच को. ठीक है. सो इंडियन यूट्यूबर, इट्स अ गुड चांस कि अभी आप रिवाइज कर लो एक बार और फिर जब हम मैराथन करेंगे हम तब भी उसको रिवाइज कर लेंगे. सो इट्स वेरी लाइकली दैट यू डोंट फॉरगेट देम. और इतने साल स्कूल में कर लिया यार, रिविजन करना पड़ेगा. ओके. सो बिफोर आई प्रोसीड विद द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, we have our all India open mock CLAT mock 2 that's free of cost, happening between 22nd to 1st of October. So if you still haven't given registered for this mock, register कर लो. 22nd को ये live जाएगा, 1st of October को ये बंद हो जाएगा. प्री रजिस्टर करना पड़ेगा आपको. रजिस्टर कर लो and make sure you sit for this free mock. This gives you an opportunity to compete with thousands of people across the country. So make sure you give it, spread the word across your friends, circle and other CLAT aspirants as well. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ. क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? पता है क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच? सीधी बात नहीं बोलना, उसको इस तरीके से लिखना कि वो अट्रैक्टिव बन जाए रीडर के लिए. ये एक टूल होता है, एक मीडियम होता है जो एक राइटर यूज करता है अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. In English, it's nothing but, a way in which a writer tries to make his piece of writing interesting by not saying something plainly. कल मेरी क्लास है, figures of speech important है. Not saying something very directly. Twisting it in a set of words that makes it very interesting. And how can we twist the set of words and not say things directly? There are many figures of speech. Okay. Now let's talk about what are the figures of speech that are important for us and what are that we can skip. If you pick up Brennan Martin, Raymond Murphy or any of the grammar book, you'll find hundreds of figures of speech. Do you think CLAT wants you to be a literary graduate, a literary expert? Of course not. Since CLAT doesn't expect you to be a literary master, you don't have to delve deeper into कितने types के हो सकते हैं. जैसे for example, irony.
A common figure of speech. I'm sure you've heard of it. Irony के ही 5 से 6 types of irony, verbal irony, situational irony, बहुत सारे types of irony हो सकती हैं. You don't have to dwell so deep. आप सिर्फ सेंटेंस को पढ़ के अगर समझ पाए कि आयरनी है या नहीं है, this will suffice your need. So I am going to be discussing roughly, hi Shivangi, I'm going to be discussing roughly 6-7 figures of speech today. And for some reason I'm calling it parts of speech. I don't know why. But then I'm sorry for that. I have not been keeping really well for the last 3 days. I've been canceling classes. This class was scheduled on Friday. I had to reschedule it. I'm sorry for that. So I'll be discussing roughly 6-7 figures of speech today. Next class mein I'll increase the number. I'll also introduce you to some difficult ones. Okay? So stick with me to the next class as well. Start करते हैं first figure of speech के साथ. सबसे common और शायद सबसे ज़्यादा आने वाले figure of speech में से है simile. As the name suggests, simile का काम होता है to draw similarity. ये दो अनरिलेटेड चीजों के बीच में जब हम एक कॉमन लिंक निकालते हैं, जब हम सिमिलैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वो होता है सिमिली. सो अनरिलेटेड चीजें, फॉर एग्जाम्पल अल्फा एंड गॉडेस, अनरिलेटेड चीजें, आपने उन दोनों के बीच में लिंक बनाया, ये एक सिमिली हो गया. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट और सचिन तेंदुलकर, कोई लिंक नहीं, आपने एक लिंक बना दिया. फॉर एग्जाम्पल अ ट्री एंड अ सोल्जर, कोई लिंक नहीं है बट आपने टू अनरिलेटेड चीज के बीच में एक लिंक बना दिया. सो व्हेन यू ड्रॉ सिमिलैरिटी बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, okay, that is an example of simile. But remember, simile is absolute direct comparison using the words like, so, as. Okay, we will use these words like a soldier is like a tall standing tree. Tree और soldier में कोई similarity है नहीं, but you've drawn a similarity using the word like. The soldier is like a tall standing tree. We've used the word like, so, and as. Right? That is an example of a simile. So one thing we need to remember is we will use like or as or so for drawing comparison between two unlike things. The usage of any one of these or a synonym to it is very, for example, इसका एक synonym हो गया akin. Akin means like. Okay? Similarly, ये सब इसके synonyms हो गए. So you're using one of these is necessary for a simile to be there. Let's take an example. The mountain peak stood tall like a sentinel, watching over the valley below, unmoving and majestic. यहाँ कौन कौन से वर्ड्स में सिमिलैरिटी ड्रॉ करी है एग्जाम्पल में? Namra, I'll get that checked today. Okay. What are the two words in which we're drawing similarities? The mountain peak like a sentinel. You have compared these two using the word like. It's a clear example of a simile. Exactly. That's the first figure of speech. Let's move to our second figure of speech. I think सबसे ज़्यादा जो आपको figure of speech दिखता है mocks में, examination में, in pieces of writing, and that is a metaphor. The most common one. Please get this clear. Yes, correct, Namra and Rishi. Absolutely correct. Let's get metaphor very clear. There is technically only one difference between a metaphor and a simile, and that is in simile we use like, so, or as for drawing comparison. But in metaphor we draw comparison without the usage of like, so, or as. We do not use these direct words. So what does metaphor mean? Metaphor means there is a similarity, a comparison between two unrelated items, unrelated objects, but it's an indirect comparison. We do not use like, so, or as because it is an indirect comparison.
एग्जैक्टली, इट्स एन इनडायरेक्ट वन, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल देखते हैं। ये सिमिली का एग्जाम्पल था, द माउंटेन पीक स्टूड टॉल लाइक अ सेंटिनल। इसी सेंटेंस को इफ आई से द माउंटेन पीक is a sentinel, this is a metaphor, it's nothing but simile। जहां आप like so और as नहीं यूज करते वो metaphor हो जाता है, it doesn't use like or as। Let's take an example, time is a thief that steals our moments, leaving us only memories to hold on to। What are the two things, unrelated things being compared? Which one? देखो एंड्रॉइड, कोई डिफरेंस नहीं है मेटाफर और सिमिली में। मेटाफर और सिमिली में आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं, जस्ट दैट मेटाफर में आप लाइक सो और एज यूज नहीं करते हैं, सिमिली में आप लाइक सो और एज यूज करते हैं। कोई भी दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहां है टाइम और थीफ, ठीक है, इसको तुमने लिख दिया टाइम इज लाइक थीफ, वो बन गया सिमिली, क्योंकि तुमने लाइक यूज कर दिया तो सिमिली में लाइक यूज करना जरूरी है। बट अगर आपने कह दिया टाइम इज अ थीफ, तो यहां टाइम को थीफ से कंपेयर किया गया है बिना लाइक सो और एज के, वो मेटाफर बन जाता है। एग्जैक्टली, यस, करेक्ट, लाइक लाइफ इज अ ड्रीम, यस नैंशी, करेक्ट। सर दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ मेटाफर। आया समझ में सबको? Quickly send me a thumbs up very, very quickly, everyone, if you've understood what is a metaphor as well. Now let's gradually increase the difficulty. Okay? Personification. Personification 2 years, 3 years back CLAT में, I think 2020 या 21 में जो cat in the rain वाला passage था, वहां personification as a question आया था, उसका correct answer personification था। Now personification is, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि लोग यहाँ ना मिसकंसेप्शन रखते हैं कई बार। एक नॉन ह्यूमन चीज को आप एक ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं, वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। कई लोग सोचते हैं हम एक एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे रहे हैं, बट मैं ग्लासेस को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे सकती हूँ, मैं पेन को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे सकती हूँ, मैं किसी भी चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे सकती हूँ। इट जस्ट हैज टू बी अ नॉन ह्यूमन थिंग। मैं एक माउंटेन को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे सकती हूँ। ओके, सो any non-human thing which is given a human attribute, a human quality, or in any way you showcase this non-human thing acting or behaving like a human, this is called personification. Yes, human characteristics are given to non-human things. So ये non-human thing animals भी हो सकते हैं, like a cat in the rain में a cat was behaving like a human, है ना, hungry था, longing था, lonely था, grieving था, all of these were qualities a human has, and these qualities were attributed to a cat there. So an animal can be considered having human attributes and qualities. A non-living thing like a mountain or a tree can have human qualities. Okay? अच्छा, यहाँ पे एक और confusion लोग रखते हैं, a soldier is like a tall standing tree. Is it a personification or not? A soldier is like a tall standing tree. क्या है आंसर? No, it is not. Because a soldier is a human. That's what, जोया, यहाँ कंफ्यूजन होता है। देखो, आपने नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं दिया, यहाँ एक ह्यूमन को आपने एक नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर किया लाइक यूज करके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली, दिस इज नॉट पर्सोनिफिकेशन। सोल्जर को, एक लिविंग बीइंग को आप एक नॉन लिविंग एट्रीब्यूट दे रहे हो, कि जैसे टॉल स्टैंडिंग ट्री बिल्कुल अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, वैसे ही सोल्जर बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ही विल फाइट टिल ही इज डिफीटेड। हम एक नॉन ह्यूमन को क्वालिटी देते हैं जब ह्यूमन, तब वो पर्सोनिफिकेशन होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिमिली, है ना?
ठीक है, दिस इज नॉट अ पर्सोनिफिकेशन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नॉन ह्यूमन को जब ह्यूमन एट्रीब्यूट मिलते हैं तब वो पर्सोनिफिकेशन होता है. यहाँ ह्यूमन को नॉन ह्यूमन एट्रीब्यूट मिल रहे हैं. दिस इज नॉट अ पर्सोनिफिकेशन, इट्स द अदर वे अराउंड. कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. द सन स्माइल्ड डाउन द चिल्ड्रन. अब देखो, सन इज अ नॉन ह्यूमन थिंग, स्माइलिंग एट्रीब्यूट ह्यूमन का है, तो हमने सन को पर्सोनिफाई कर दिया. इट इज स्माइलिंग डाउन द चिल्ड्रन, स्प्रेडिंग वार्मथ एंड चीयर. ये एट्रीब्यूट्स ना, स्प्रेडिंग वार्मथ, चीयर, स्माइलिंग, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने यहां सन को दे दिया है. सो सन इज पर्सोनिफाइड हियर. ओके, यस अपूर्वा, करेक्ट. यस दो या तो मेटाफर हो जाता. ओके, let's move to our, so I hope personification is clear to everyone. Let's move to our next figure of speech, and that is irony. देखो, irony में this is sometimes commonly confused with a critical reasoning topic, and that's a paradox. तो paradox में क्या difference होता है, irony में क्या difference होता है, मैं आपको बताऊंगी अभी, आज ही क्लास में बताऊंगी. तो पहले irony समझो. irony is in हिंदी जो expect किया उसका उल्टा हो गया. होना कुछ और चाहिए था, कुछ और ही हो गया. ऐसा हो नहीं सकता था. You know what should have happened? The opposite happened, and that's irony. So let's take an example. अल्पा मैम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी थी, होना नहीं चाहिए था, देखो हो गया. ये तो आयरॉनिकल सिचुएशन हो गया, है ना. ऐसा होना नहीं चाहिए था. और फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक लॉयर से कि वो अपने बेसिक आर्टिकल्स भूल जाए. आप फायर स्टेशन जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट फायर प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो जल के राख हो गया. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटलिस्ट है, उसका काम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको आपने कचरा फेंकते देख लिया और उस पे चालान लग गया कि तुम कचरा फेंक रहे थे. ऑल ऑफ दीज आर आयरॉनिकल सिचुएशंस. फायर स्टेशन बर्निंग डाउन, पुलिस स्टेशन में रॉबरी हो गई. All of these are ironical situations. You know, the opposite happened. Expected, the opposite of that happened. That is, our fire station should not have got fire. Environmentalists would have protected the environment and would not have got littering ticket. Now, let me talk about paradox here. Paradox looks similar to it, right? But the only difference between a paradox and irony is, in paradox, you resolve it. That is, you have a reason to why this irony exists. आपके पास रीजन होता है कि इस एनवायरमेंटलिस्ट को क्यों मिला लिटरिंग टिकट. आपके पास एक रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आयरॉनिकल सिचुएशन क्यों हो रही है. अगर आपके पास रीजन होता है, वो एक पैराडॉक्स बन जाता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पैराडॉक्स एंड आयरनी. ऑल राइट गाइस, नाउ लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल मोर अबाउट आयरनी हियर. Irony is two opposite situations. Agreed? What was expected and what has happened. Opposite. There are many sets of opposites in figures of speech. This is the first opposite that we are doing. If you look at it, antithesis is a set of opposite. Oxymoron is a set of opposite. There are many sets of opposites. Anticlimax is a set of opposites. तो ये जो ऑपोजिट्स है ना, हम ये धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा. तो आज की क्लास में हम दो सेट ऑफ ऑपोजिट्स करेंगे. वन आयरनी वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, या ऑफ कोर्स सोनम, दैट आल्सो इज एन एग्जांपल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ ऑपोजिट्स दैट वी आर डूइंग, जहां आपको ऑपोजिट सिचुएशंस मिलती हैं. सेकंड सेट ऑफ ऑपोजिट्स देखते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. यहां भी ऑपोजिट्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ऑपोजिट? लेट मी सी इफ यू रिमेंबर इट. Epigram as well. Let me see if you remember what is the set of opposite used here in oxymoron. It's okay, Dia. Of course, yes. Stalin, haters. What is the set of opposites used here in oxymoron? The set of opposites is a set of, it's antonyms, exactly, a set of opposite words. Opposite words are used. Like, I'll show you an example. Very easy. Bitter, sweet. That's an oxymoron. Adjacent to each other is very, very important. It's very important. Remember, opposite words can be placed anywhere in any figure of speech. In oxymoron, they have to be placed
adjacent to each other, only then they would be called an oxymoron. Remember, that's a second set of opposites that we have seen. Here we use two opposite words placed close to each other. Same difference. More oxymorons, everyone. We've done bittersweet, deafening, silence. How can silence be deafening? Deafening will be very loud noise. It's so loud that it's making you deaf. Silence cannot make you deaf. It technically means the silence was eating you up. You wanted someone to speak. That's the meaning you want to denote. It's indirect way of saying something. That's the beauty of figures of speech. Perfectly imperfect, the same difference. Correct. So, here, a deafening silence, bittersweet, and all the examples we have done, these are oxymorons. Just remember, we'll have two opposite words, but they will be placed adjacent to each other and they'll be called oxymoron. Okay? In the next class, I'll be introducing you to more set of opposites like antithesis and anticlimax and climax and so other as well. Let's talk about euphemism now. Euphemism में the root word is eu. Eu means good. Okay? तो euphemism में आप अच्छी बात बोल रहे हो? नहीं. You're saying something that's hurtful. But you're saying it in a polite manner. That's euphemism. Saying something hurtful, but choosing your words very carefully so that you don't come across as rude and hurtful to someone, that's euphemism. Let me give you an example. If you have to fire someone and you just go and tell them, oh, you're fired, that's too rude. That's very hurtful. Instead, you can just say, we have decided, our team has decided to put your employment on hold currently. This automatically means you're fired, okay? You just sounding a little polite so that you don't come across as rude. If someone has died, you don't just go and say, oh, he's dead. You'll say, he passed away. He's no more. Okay? It's, no, taunting in a nice way. It's not taunting basically. See, if people are dead, you don't taunt. You just expressing a thing that can be hurtful to the other person, which could be a sad news, but you're expressing it in a subtle way, in a polite way. The choice of words is going to be very careful. See, she's in a better place now for a person who's died. Okay? Or, oh, just a minute. Or for example, when you fire someone, you say that, you're telling me a fairy tale. Oh yeah, that's for when someone tells you a lie. So remember, it's not taunting. It's just that you are expressing something subtly because the other person might be taken aback, might be really hurt with it. Unpleasant things are expressed in a subtle way. Okay? Bad news in a nice way. That's euphemism. So these were the 6 figures of speech we did today, everyone. And we took some examples as well. Now, the homework that I'm going to give you before I'm going to continue is you have to work on 6 more figures of speech on your own. In the next class, I'll be bringing 6 more figures of speech. We'll see if your figures of speech, they coincide with mine or not. Okay. And I'll try to bring 6 new ones for you so that you develop an understanding for better ones, so that our list is endless, so that we are able to cover up all of them. I can't teach you all of them in the class today, but if you do some homework on your own, it's always good for you. So before I wind it up, we have launched a test series for our CLAT 2024 aspirants. Since you have barely 19 days left for your examination, you rush up and enroll yourself for our test series. You can speak to our counselors on this number. Alternatively, the link is there in the description box. You can click on that and register yourself for the test series. Also, you can see us in the classes if you wish to join for our 2024 comprehensive course. That's the number of our counselors. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड डू नॉट फॉरगेट आवर ऑल इंडिया ओपन मॉक क्लैट 2 goes live between 22nd September to 1st of October. So don't miss out on that. So don't miss out on that. I'm going to be seeing you after you're done with your open mock. You'll be getting a chance of competing with many kids here. Do not miss this golden opportunity. If you think the session helped you,
hit the like button, comment on the video as well, and subscribe to our channel. That's our Instagram, Facebook, Telegram, and Google Play link. That's there in the description box as well. Make sure you follow us on all our social media handles. That's going to be all for today, everyone. I shall see you in the next class. Have a very, very good evening. God bless you. Where to practice, ma'am, figures of speech, Jatin, Renan Martin is a very good source. Okay, that's going to help you. Thank you, Jatin.